doing good? In this video, we will be studying management as a profession. But before that, I would like to congratulate Twinkle, Priya and once again Fury Gaming for answering the question that I asked in my previous video correctly. So congratulations guys. Now in this video also, I would be repeating the same drill. I would be posting a question in between the video and you guys have to answer it correctly in the comment box. So let's just start with management as a profession. Now what is profession? I would be reading out a definition for you. Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having special knowledge and skills which is used impartially to serve various sections of the society. Now this definition is quite complicated, so I will break it. The first aspect of profession is it is an economic activity. By economic activity, I mean that any professional who is pursuing any kind of profession is paid by its clients or customers. फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको उसको फी पे करनी पड़ती है. अगर आप कोई लॉयर के पास जाते हो तो उसको भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसकी सर्विसेज के लिए. द सेकेंड एलिमेंट हियर इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स. तो कोई भी प्रोफेशन हो उसके लिए यू हैव टू हैव अ डिग्री फर्स्ट. आपको एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है और आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर डिग्री चाहिए होती है टू कॉल योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल. नाउ द लास्ट पार्ट इज टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो जो बेसिक मोटिव होता है किसी भी प्रोफेशन का इज टू सर्व द सोसाइटी बट नॉट इन अ वेलफेयर काइंड ऑफ वे, क्योंकि आपको फी पे करते हैं आपके क्लाइंट्स या फिर कस्टमर्स या फिर वो आपको कमीशन पे करते हैं. एज पर योर प्रोफेशन जो भी चीज होती है वो आपको पे करते हैं. नाउ जस्ट लाइक साइंस एंड आर्ट हैड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन ऑल्सो हैज सर्टेन फीचर्स एंड नाउ वी वुड बी टेस्टिंग देम ऑन मैनेजमेंट, वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट. द फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. कोई भी प्रोफेशन हो उसके लिए you have to have a degree, and while getting your degree you study various theories and various principles related to that particular profession. For management, yes, we do have various theories and various principles propounded by management experts, so we can say that yes, according to this particular feature, management is a profession. Now moving on to second feature. The second feature of profession is restricted entry. Now, just now I said that you have to have a degree for pursuing any profession. So for management, you do not require any degree as such. कोई भी इंसान एक मैनेजर बन सकता है अगर उसके पास वो स्किल्स हैं and if he is able to manage an organization or a group of people. So yes, according to this feature, management is not a profession. Now the third feature of profession is professional association. Now what is this professional association? एक आप इसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह मान सकते हो जो कि कुछ रूल्स सेट करती है किसी भी प्रोफेशन के लिए और सर्टिफिकेट ग्रांट करती है आपको. अगर आपने वो पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो वो आपको एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट देगी और उसके बाद ही आप अपना जो भी प्रोफेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हो. फिर एंट्री रिस्ट्रिक्ट करने का भी काम उसी पर्टिकुलर एसोसिएशन का होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट तो ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है, बट येस वी डू हैव वन एसोसिएशन AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. बट जरूरी नहीं है कि जो भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इस पर्टिकुलर एसोसिएशन का मेंबर नहीं है वो मैनेजर नहीं बन सकता. एनीबडी कैन बी अ मैनेजर whether he is a part of this organization or not. So according to this feature also, management is not a profession. Now the fourth feature of profession is code of conduct. जितने भी professions हैं उनका एक अपना code of conduct होता है and the professionals have to adhere to this particular code of conduct. अगर वो कोई भी rules या regulations नहीं मानते हैं तो हो सकता है जो उनका लाइसेंस है वो उनसे ले लिया जाए और उनको प्रैक्टिस आगे ना करने दी जाए. बट
फॉर मैनेजमेंट ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, और आपका जिस तरीके से मन करता है आप उस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हो, अपने जो भी काम है उसको मैनेज कर सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू दिस feature also, management is not a profession. Now the last feature of profession is service motive. तो मैनेजमेंट जितने भी प्रोफेशंस हैं वो सब इसीलिए हैं ताकि वो सोसाइटी को सर्व कर सके. एंड एज फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो, मैनेजमेंट भी हमें सोसाइटी को सर्व करने के लिए ही चीजों को मैनेज करते हैं. एंड सो अकॉर्डिंग टू दिस feature also we can say that yes, management is a profession. So we should not hesitate to say that management is a profession. काफी सारे फीचर्स नहीं भी मिलते हैं, बट कुछ फीचर्स हैं जो सिमिलर हैं प्रोफेशन के. सो वी कैन से दैट यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. एक्चुअल या फिर एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है, बट येस इट इज अ प्रोफेशन. So with this we finish the video portion of this particular topic. Now if you have any doubts, just comment below and do not forget to answer the question that I've asked. So stay safe, stay healthy, and thank you.